स्टार्ट करें. Good morning, sir. And enjoy this. First of all, the most important thing that you have to enjoy this. Okay? India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, legend, and the great grandmother of traditions. A very fresh morning to all of you present here. I, Samriddhi, head girl of the Millennium School, Kurukshetra, take this honor to welcome you all on this Interschool Youth Parliament competition. India is the world's largest democracy and not mere democracy in terms, but a functioning democracy. So that in India, we are assembled here for Youth Parliamental Agenda, Uniform Civil Code to discuss and deliberate among the youth minds of India. I extend my sincere welcome to respected Director Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, event in charge, teachers, faculty members of the Millennium School, Kurukshetra, the students and teachers from different schools present here in this youth parliament. I feel delighted to welcome this session. We all are very privileged to have you with us. To begin with the event, I would like to invite Honorable Director Headmistress Ma'am to come on the stage and enlighten the lamp of wisdom and knowledge. Thank you so much, ma'am. Mr. Manasvi, the moderator of this session, is a student of Political Science Honours in the University of Delhi. He is a national level debater and a prolific speaker who has participated in many national and international conferences. He has been debating since standard 4 in his school times. Recently, he was awarded with the Young Statesman Award by Christ University, Bangalore, and won first prize at national level in an event organized by Indian Naturopathy Organization under the Ministry of Ayush Government of India.
Good morning, everyone. Excuse me for the old thought, but nonetheless. Okay, see, youth parliament has nothing to do with making politicians, but definitely academicians, because this is something which is lacking in most number of politicians nowadays. When you see debates happening in the real parliament and feeling not to be intellectually stimuli, you feel that something is missing, and you as the future creator of the nation are encouraged to do so. Not taking much of the time, I, when responded by the power of the moderator, the Millennium School Youth Parliament officially declared the one. Thank you. Alright, so we will be starting with the official proceedings on a comment up by all the parliamentarians outside of your ruling or opposition thing. A comment up and then we'll start with the proceedings. So the procedure has already been indicated to you through WhatsApp communication, and that I think should be pretty much clear. You have a placard with you also. You can raise it anytime if you deem fit or you want to ask anything. And so, not taking much of the time, let's begin with the formal proceedings. First of all, I'll be going with the roll call followed by the oath taking ceremony, and then we'll start with the opening speeches with Millennium Modi being the first speaker, leader of the house. Thank you. Alright. It is an Indian committee, so you don't have to stay present and voting, simply you can stay present, or any slogan which you deem fit according to your constituency and representation. Narendra Modi, and you should be clear enough without using the mic at the first go. Mic is an option, not a mandatory thing to be used. Okay? Amit Shah, raise your placard, no hand raising. Rajnath Singh, Nirmala Sitaraman, Nitin Gadkari, Dharmendra Pradhan, Dr. S. Shankar, Ravi Shankar Prasad, Anurag Singh Thakur, Sadhvi Pragya, Smriti Irani. I hope no one is going to pass flying kisses to ma'am. You heard the news? Okay. Piyush Goyal? Om Birla? Rajendra Agrawal? SS Ahluwalia? Bhagirat Chaudhary? Ramakant Bhargav? Sunita Duggal? Naib Singh Saini? Ashwini Kumar Chaubey? Sunny Deol, Rama Devi, Menka Gandhi, Zarin Jamyang Namgyar, Queen Oja, Himadri Singh, Vasundhara Raje, Giriraj Singh, Jai Shri Ram, Yogi Adityanath, Shivraj Singh Chauhan, Hemant Bishwa Sharma, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनोहर लाल खट्टर, सर मेवात में कंट्रोल करिए, जय श्री राम से क्या होगा? हेमा मालिनी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस. All right. Any other portfolio left from ruling party? Going once, going twice, going thrice. Seeing none, thank you. Opposition. Congratulations to Rahul Gandhi for reinstating as a member of parliament. Rahul Gandhi. Present. Sonia Gandhi. Present. Adhir Ranjan Chaudhary. Present. Mallikarjun Kharge. Present. Dr. Farooq Abdullah. Why your chair is like behind? Okay. Abhishek Banerjee. Asruddin Owaisi, Mimi Chakraborty, oh my god, Mahua Moitra,
Anto Anthony, Present. Manoj Kumar Jha, Present. Mamta Banerjee. Oh my God, this is very unique coming out for you. Shashi Tharoor, Supriya Sule, Pratibha Singh, Priyanka Gandhi, Arvind Kejriwal, Dipendra Hooda, wow. Nitish Kumar, बिहारी की परिणाम स्वीकार करो. okay. Mehbooba Mufti, Present. Ashok Gehlot, alright. Manmohan Singh, great. P. Chidambaram, great. Jagan Mohan Reddy, Lalu Prasad Yadav, Sharad Pawar. Anyone left from the opposition bloc? Going once, going twice, saying none. Thank you so much. Alright, so the total strength of the house stands at 36 plus 26, which is 62 delegates, and which makes up to majority stands at 32. Alright? Majority to pass any motion stands at 32 votes. Got it? Okay. Just give me a second. Speaker taking an oath in Hindi, please come on the stage. It is encouraged to applaud Mr. Amit Shah. मैं अमित शाह युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। Thank you, delegate. Speaker in English, followed by speaker in Sanskrit, followed by speaker in Bengali. I, Anurag Singh Thakur, having been nominated Member of House of the People, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you, delegate. Parliamentarian in Sanskrit, followed by parliamentarian in Punjabi. This is really appreciable that ruling party is tapping their desk for the opposition. नरेंद्र मोदी जी अपने इसको संभाल के रखिए गुट को, समझाइए इनको कुछ. ऑलराइट. अहम नीतीश कुमार युवा संसदस्य सदस्य निर्वाचित ईश्वरस्य शपथं गृह्णामि प्रतिज्ञां करोमि यतः विधिना स्थापितः भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धां धारयिष्यामि देशस्य प्रभुं सत्तां एकतां च संस्मरामि तथा यं पदम् अहं ग्रहीष्यामि तस्य कर्तव्यं निष्ठापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि. धन्यवाद. Punjabi. After the Punjabi speaker is done, all the volunteers, reporting board, cinematographers, please reach out to me at the back of the stage here. मैं लालू प्रसाद यादव जो नौजवान संसद ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। Thank you so much, Delegate. All right, we will be beginning with a round of opening speeches just after a short break. You all have 5 minutes of lobbying session. Discuss among yourselves what you want to speak,
how you want to handle the opposition, how opposition is going to target the ruling party. You have 5 minutes sharp wait. It is 8:51 in my mobile. At 8:55, I'll hear Mr. Modi. Yes, cinematographers, volunteers, please come on the stage. You can get up from your desk and discuss. This is moving session. Volunteers कौन है पहले वो आ जाओ You all are volunteers, right? देखो पहले जितने भी volunteers हैं 5-6 जितने भी सबको इधर बुला लो हाँ जो भी volunteers हैं आ जाइए आप लोग बोलेंगे जब भी कोई पार्लियामेंट्री चिट उठाया एक चीज़ का ध्यान रखिए अगर इसमें वाया नहीं लिखा तभी वो चिट स्टेज पर आएगी जिसमें वहाँ पे रखते ताकि बच्चों उसमें डाली ताकि आप लोग हम दो बॉक्स एक जिसमें चिट्स आ रही है एक चिट में चेक जिस चिट पर वाया नहीं होगा वो चिट डायरेक्ट टू डायरेक्ट अभी किसी ने वहाँ पे अनचेक करके दूसरे ब्लॉक में डाल उसके बाद यही प्रोसीजर आपको करना है काम नहीं आराम से बैठ जाना भागना रोकना नहीं है और अगर कोई ज़्यादा परेशान करे मेरे को बताना एक और बात अगर किसी का इंटरनेट ऑन हुआ या मोबाइल डाटा ऑन हुआ है फिर वाईफाई हुआ मुझे बताओ पर्सनली जस्ट कंपनी और मुझे बताना कि सर वरना इंटरनेट यूज़ करें इंटरनेट अलाउड नहीं है डाउनलोडेड स्क्रीनशॉट देख लेना कभी वो स्क्रीनशॉट ना देख लो फिर डाउनलोड ना किया लेकिन अगर इंटरनेट यूज़ जस्ट लेट नो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कोई भी शेयर करेगा अगर लगे कि ज़्यादा रश है देन इट कैन कम ठीक है तब तक आप लोग बैठ जाइए All right, back to your seats. Back to your seats, delegates. I'll make sure you will not get bored, even the teacher sitting behind. You enjoy the proceedings at least. Alright. So, before starting with the opening statements, any points on the floor? Any points on the floor? You want to ask something? You have some query? Yes, Amisha. Ask that while answering the question, can we answer by seeing the answer in our Definitely. You can refer to your materials. सीखा थोड़ा मुझे ऐसे उल्टा नहीं कहता अगर visual is it I don't get it I ask any points on the floor the same way I asked. Did you raise your shot card? I recognize and
ask a question. More questions? Yes, Raja. Yes, you can exceed by 5-10 seconds, but I stated it very clearly. If you start a new point at 61 seconds, that will not be considered for marking. If your new point started at 59 seconds, 99 nanosecond, that will be counted. Okay? More questions? Yes. Thank you, Chair, for recognition. Sir, can we write substantive chit after our speech? डेफिनेटली सब्सटेंटिव चिट का मतलब ही यही होता है जो आप मुझे अपनी स्पीच में नहीं बता पाए वो सब्सटेंटिव चिट के थ्रू आप मुझे भेजेंगे. So we can raise it anytime. Yes, you can raise your chit. Volunteers will collect it. Will give it to me. Okay. More questions? Any questions? Any points? All right. Seeing none. So, any motions on the floor? Any motions on the floor? Any motions to start with the opening statements? Any motion on the floor? Yes, S. Shankar. Dr. H. Shankar would like to raise the motion to start the GC. Opening statements. All right. Motion raised by Dr. H. Shankar to start with the opening statement. Delegates in favor, please raise your placards. Delegates in favor, please raise your placards. Motion passes. Motion passes. Thank you so much. We will be moving toward the opening statements. The first default speaker will be the leader of the house, Mr. Modi. Sir, इसकी आवाज थोड़ी कम कर दीजिए. आवाज थोड़ी कम. इसकी आवाज थोड़ी कम. मुझे All right, so the first default speaker will be Mr. Narendra Modi, followed by other speakers. Delegates wishing to make opening statements, please raise your placards. Delegates wishing to make opening statements, please raise your placard. Narendra Modi, followed by S.S. Ahluwalia. Followed by is it other yes Mallikarjun Kharge. Followed by Hemant Bishwa Sharma. Followed by Sadhvi Pragya. Followed by Mahua Moitra. Followed by Nitin Gadkari. कहाँ पे? I said followed by you, so put it back down. Followed by Abhishek Banerjee. Followed by Gyan Garwa. Followed by Sir सीधा. प्लकार्ड अगर सीधा होता है इट इज फाइन, अगर ऐसे होता है मतलब आपके हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं व्हिच इज नरेंद्र मोदी. अगर आपका प्लकार्ड उल्टा है मतलब कि आप प्रेजेंट हैं लेकिन आप प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले, पुट योर प्लकार्ड ऐसे ठीक. बस तो पोर्टफोलियो से हम नीड टू गेट लाइट लग गई तो मुझे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है. यस योर्स यू शुड आगे ओके भागे. ओके विल रिकॉग्नाइज मोर स्पीकर इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. Yes, Narendra Modi, are you ready for the speech? Any points of the before that? Yes, you have a point. Which point you raising? Thank you, Chair, for the recognition. PPP. Okay. Can you please tell after whom I have to speak my statement? No. All right. It's a parliamentary inquiry, by the way. Yes. More questions? Seeing none. Narendra Modi ji, next 60 seconds ball was. आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने जा रहे हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश के सभी धर्मों समुदायों के लिए समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है. आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक कानून एक समान होगा. यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है. इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास है. हमारी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आए. ये सिर्फ इसलिए नहीं
फॉलो करें। Thank you. Listen one thing. Tapping 4 times is for appraisal. Tapping, banging the table means you are condemning his speech. So bang it 4 times, 5 times is fine. You keep on banging. पूरा दिन बजाना भी 5 घंटे हैं. You know, preserve your energy. Okay? Yes, fine speech. Yes, points on the floor. If anyone of you have a point of personal privilege, parliamentary inquiry, point of order, point of information. We'll take 2 questions. Rahul Gandhi, followed by Lalu Prasad Yadav. Other floor for the chicks is open. Thank you, Chair, for the presentation. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते बल्कि एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी के एमएलए मयंकेश्वर सिंह जो कि ईस्ट उत्तर प्रदेश में एक बार संबोधन कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हिंदूज इन हिंदुस्तान wake up, the beard will be pulled and made into a choti. If you have to live in Hindustan, you have to say Radhe Radhe, as like those who went to Pakistan during the partition. You can go too. You have no use here. तो इस पर बीजेपी पार्टी क्या कहना चाहेगी? It's really shameful. Yes, reply. मैं किसी भी स्पीच का पर्सनली भी ऑफिशियली भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ। एंड मैं भी चाहती हूँ कि ये चीज़ बदले और ये बदले की जरूर। हाँ, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हिंदुओं का राज हो, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब मिलकर आगे बढ़े, क्योंकि अगर हमें इस देश का प्रोग्रेस चाहिए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब एक साथ आगे निकल बढ़े। और रही बात स्पीच की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में इतना कुछ बोलना चाहिए कि वो स्पीच इसने दी थी, वो उनकी गलती थी। And we should. Okay, so you're accepting the fact that your minister has a slippery tongue. Not even our ministers, they have also slippery tongues. And this is politics. Tongues can slip, but इतना भी नहीं कि भी आप बिल्कुल ही किसी चीज को. All right, Modi ji, no need to justify. Is the audience clear with the voice? समझ आ रहा है ना मैम सब कुछ proceedings? ठीक है, thank you. All right, yes, लालू प्रसाद यादव. माननीय प्रधानमंत्री मैं पूछना चाहूँगा कि ये किसी भी स्पीच का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इनको मैं कुछ आंकड़ा गिनवाना चाहूँगा। A study released on Wednesday by the Association of Democratic Reforms shows that ruling Bharatiya Janata Party has the most number of MPs MLAs with cases of crimes against women. BJP has 116 MPs for 39% winning candidates with criminal case. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका भी सपोर्ट नहीं करते आप? Yes, Yes, sure. I will support pride. मैं कानून की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कानून इतना सशक्त बने कि ये जो सब हो रहा है ये ना हो। इवन इतने सारे देशों में क्यों उनमें क्राइम कम है? क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर हम अपनी कानून व्यवस्था अच्छी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। And I will support that. all right, thank you, ma'am. SS Ahluwalia, next 60 seconds. Thank you for the recognition, Chair. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं SS अहलुवालिया UCC को सपोर्ट करती हूँ। UCC, Uniform Civil Code. A uniform civil code means that all sections of society, irrespective of their religion, shall be treated equally according to a national code, which shall be applicable to all uniformly. इसके कई से benefits हैं, such as it will integrate India, it will reduce vote bank politics. It is a sign of modern progressive nation. It will give more rights to women. It will many provisions of specific personal laws are in violations of human rights and it will stop them. और बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंडिया की डाइवर्सिटी खत्म करना चाहते हैं इसकी वजह से, but I want to tell you that Article 25 and 26 guarantee the freedom of religion and UCC is not opposed to secularism. Thank you so much. ये जिसके भी टेबल पे माइक रखा है बंद कीजिए माइक को. स्विच ऑफ द माइक. वो टैप करते हुए बहुत आवाज आ रही है. Yes, points to SS Ahluwalia.
Points to SS Ahluwalia. Personal privilege. Parliamentary inquiry. Order. There is order in his speech. Speeches ध्यान से सुनिए. Good morning. Point of information. Sonia Gandhi followed by Moha Moitra. Everyone will get equal recognition. Yes, ma'am. माननीय मंत्री जी ने कहा कि यूसीसी के आने से वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, पर मेरी समझ में तो यूसीसी है ही वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसका आप क्या एक्सक्यूज देना चाहेंगे? Yes. मैं ये मानती हूँ कि जब लोग इलेक्शंस में एक दूसरे को लीडर्स को वोट देते हैं तो वो रिलीजन को कहीं ना कहीं देखकर चलते हैं कि उनको अपने पर्सनल लॉस में कुछ बेनिफिट होगा। बट अगर हम सबके लिए ही एक ही बना दें तो वो ऐसा नहीं करेंगे। दे विल ओनली चूज द मिनिस्टर्स व्हिच विल टेक द कंट्री फॉरवर्ड। Okay, thank you. Yes, Moha Moitra. Over 11 crore people and around 700 different tribes. That is what India's diversity lies in. And you say you are not violating the rights of the minorities that include the tribes. How can you say so? How is it not against secularism? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो यूसीसी है वो पर्सनल लॉज को एक कर रही है हमारी गवर्नमेंट के लिए काम इजी करके ताकि वो सिटीजन्स को एज इक्वल देखे। हम किसी भी रिलीजन को किसी भी ट्राइब के अगेंस्ट नहीं है। Thank you so much. Mallikarjun Kharge. I, Mallikarjun Kharge, stand here as the voice of countless citizens who hold dear the ideals of diversity and secularism. Our forefathers dreamt of a nation that upholds the freedom of a religious practice. This diversity is a strength that embodies the essence of Vasudhaiva Kutumbakam. However, the BJP's pursuit of a UCC raises concerns. As CM Pinare rightly noted, it seems politically driven, not principle-led. This casts doubts on its intent and alignment with the secular fabric. Noble laureate Amrita says observations highlight the between the UCC and Hindu secularism. Moreover, UCC's potential economic implications cannot be ignored. It could impact GDP, investor confidence, and labor dynamics. In closing, I reiterate our commitment to preserving our secular foundation. BJP's UCC approach challenges the essence of our nation's diversity. Let us stand united against any move that disregards our social diversity. Thank you for a speech. Questions. From now onwards, I'm asking questions only. If you have other point, you can, get your placard hold for a minute. Then I'll recognize you have some other point. I'll ask questions directly. Questions. Ma'am, your portfolio at the back. Yes, ma'am. Vasundhara Raje, followed by Dr. S. Jaishankar. On 6 July 2023, a panel of All India Muslim Personal Law Board got support from your side against UCC. Do you also openly support various Muslim laws against women like polygamy, halala, etc.? No, we do not. It varies from law to law. We supported that because we felt that it was needed. And we do not support the other laws because I think they are unnecessary. All right. Yes, Shankar. अगर मान Wait. Any other points? Yes? POI. No. PTI. Yes? माननीय मंत्री जी कह रही है कि आप सवाल है? एक मिनट. आपको सवाल है? सवाल नहीं पूछना है अभी. सवाल के लिए मैंने 2 लोगों को रिकॉग्नाइज किया है. Question? Sunita Duggal? POO. Yes. POO. On the question or the speech? On speech. Okay. Honorable member quoted, I quote UCC, unquote Uniform Civil Code. Because UCC की 3 full forms और है. Okay. Thank you so much for bringing it to the house. Full form PO will not be considered if it is used in a political connotation, but thank you so much for bringing it to the notice of the house. Thank you. Any more points? Question? Yes. Can we raise a POI on a POI? Sorry? Can we raise a POI on a POI? POI on a POI. That's a follow-up only. Yes, can we on others POI?
Okay. Is it on the speech of Vasundhara, a question of Vasundhara Raje? No further proceedings as well. There is no such provision, but if you feel that something can make your question more vague than the question asked, then you can. Okay? Jay Shankar ji is all good to go for a question? Okay, yes. अगर माननीय ये कह रहे हैं कि यूसीसी पॉलिटिकली ड्रिवन है और अपोजिशन ये भी कह रही है कि यूसीसी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो फिर क्या आप ये एग्री कर रहे हैं कि अगर हम यूसीसी जाते हैं तो हमें वोट मिलेंगे, क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया नहीं, जो हमारा देश है वो यूसीसी चाहता है? I do not agree with that. What we mean by that UCC का vote bank for vote bank policy is that when you implement it, the Muslims are obviously going to be affected. Muslims are going to be affected. Tribals are going to be affected, and it kind of just makes them believe that UCC is for the betterment, whereas it is affecting their personal rights. I do believe that. Need to follow. Granted. आप ये कह रहे हैं कि ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करेंगे। ट्राइबल्स प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है उनके एंसेस्ट्रल लैंड छीन लिए जाएंगे यूसीसी के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। तो अपोजिशन को कैसे पता है, ट्राइबल्स को कैसे पता कि ट्राइबल्स के लैंड छीने जाएंगे यूसीसी के द्वारा? It's not about that. It is about the tradition, rich history that they come on, right? Their folk dances, their folk, everything that they do. It is very important to consider that by implementing UCC, we are kind of restraining them from practicing what they do. All right, thank you so much. Hemant Vishwa Sharma. हेमंत विश्व शर्मा यूसीसी के पास में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा मानना यह है कि हमारे देश में जो सबसे नेगेटिव चीज है वह है डिस्क्रिमिनेशन। वह डिस्क्रिमिनेशन जो सदियों से चलता आ रहा है, जिसे न हमारी सरकारें बदल पाई है, न ही हमारा संविधान। हम यूसीसी से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि उसके आने से वह डिस्क्रिमिनेशन जड़ से खत्म हो पाएगा। फ्यूचर रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो यूसीसी का ब्लूप्रिंट इस तरह तैयार होना चाहिए कि उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान में ये होनी चाहिए कि उसकी सोशल एडेप्टेबिलिटी, और साथ ही साथ हमें उन फील्ड से स्टार्ट करना होगा जो कि widely accepted है by the people and which are also most uncontroversial, like divorce laws. So people will accept UCC on a large scale. Here I rest my case. Thank you so much. Questions? Mamta Banerjee followed by Dipendra Hooda. Yes, question. Thanks, Chair, for your illumination. My question to you is, how can you derive uniformity through UCC as it does not bring equality in our society? Okay. सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, यूसीसी यूनिफॉर्म होगी सब रिलीजन्स के लिए। सभी लोग उसमें एक तरह से तोले जाएंगे और सभी जो जितने भी अलग अलग मुस्लिम पार्टीज हैं और भी अलग जो हमारे रिलीजन हैं वे सारे यूनिफॉर्म रहेंगे ताकि हमारे देश और डेवलपमेंट कर सके। All right. Granted. My question is, you are only promoting Hindu Rashtra, Hindu Succession Act or Hindu Marriage Act. Why not Muslim laws? सर हम हिंदू राष्ट्र को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सभी रिलीजन्स को एक साथ मिलाकर चलाना चाहते हैं, जिससे हमारा देश भी बाकी देशों की तरह और आगे जाए और हमारे देश की सारे रिलीजन कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड फील ना करे। No, granted. Thank you. Dipendra Hooda. आप अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देंगे यूसीसी के द्वारा, पर आपको पता है हाउ माइनॉरिटीज आर सफरिंग ड्यू टू दिस यूसीसी को लगता है कि मेजॉरिटी अपना कल्चर उन पर सप्रेस कर देगी, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर लेकिन जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनपे हम कुछ भी सप्रेस उनपे हम कुछ भी टेक योर टाइम, आराम से सोच के बोला, अच्छा बोल रहे हो। जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनपे हम कुछ भी थोपने नहीं वाले हैं। जितनी भी कम्युनिटीज हैं हम सब पहले उसके बारे में सोचेंगे कि किस कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम सीधा यूसीसी सब पे लागू नहीं कर देंगे बिना उसकी तहकीकात करेंगे। तो पहले हम सभी को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन सी माइनॉरिटीज के लिए कितना क्या बुरा है और क्या अच्छा। All right, thank you so much. Sadhvi Pragya. Yes, which point you raised to? POI to a POI.
मैंने yes बोल के मुझे लगता है गलत कर दिया, but ठीक है. What's the question? If the question, Mr. Jaishankar question will set the standard for all the delegates. If his question is worth enough, I will take the question on POI to POI, or else your POI on POI will be considered from chit only. Now it's your choice. Yes. Honorable Chair, what I can't understand is from where opposition is getting the information that minority will be suppressed by the majority of India. Because a draft is not there. Either it's their words which they are speaking and manipulating the Indians. Yes. The Hindu laws will be swayed. Mamata Banerjee. आपने ही बोला था ना ये? We are not drafting, it is the, You can't draft. Law Commission will draft. Sorry. So my answer to you is that we are not saying it because it is the opinion of the people. Minorities by themselves and Muslim women, they want to say that, and it's their opinion too. Need to follow. Granted. अगर आप यूसीसी को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुस्लिम वुमेन्स के अगेंस्ट कि वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकते इस टाइम के बाद, तो वो तो सबसे ज्यादा प्लीज होनी चाहिए यूसीसी से. But they respect their religious rights and they don't want to lose them. Okay. No cross talks. Yes. Which point? POI. On POI. Yes. No. Please. Okay. Go ahead. After this question, no POI on POI will be entertained verbally. Send via chat. The box is already half full. Okay. क्या ये कहते हैं कि हमारे टाइम में हम माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखते, लेकिन राहुल गांधी जी की एक सो कॉल्ड फॉरेन ट्रिप पे उन्होंने अपने आप ही कहा है कि आज जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हो रहा है वो 1980s में दलित कम्युनिटी के साथ हुआ, जबकि 1980s में तो सरकार ही इंदिरा गांधी जी की थी. Okay. Want to defend? Yes, please do. तो ये कहते हैं कि हम दलित का ध्यान नहीं रखते, तो इन्हीं की तो स्टेटमेंट है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 7 साल में करके दिखाएंगे. और बीजेपी की एमएलए की स्टेटमेंट है, उन्होंने हिंदूज को एक्यूज किया है तो उन्हें वोट नहीं देंगे, जबकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर इंडिविजुअल के पास अपना राइट है वोट देने का. उनकी स्टेटमेंट है, एनी हिंदू हु डजंट वोट फॉर मी हैज मिया ब्लड इन हिज वेन्स. He is a traitor. He is a sinner son of his father. He is a bastard son of his father. I am warning you this time. तो इस पर आप क्या कहना हाँ, granted. Reply. ये डेमोक्रेसी की बात ये करेंगे जो खुद अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उस जॉर्ज सोरोस के एक राइट हैंड को अपने साथ लेके चलते हैं जो कहता है मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए. सलील शेट्टी इज द राइट हैंड ऑफ जॉर्ज सोरोस हु वाज राहुल गांधी इन भारत जोड़ो यात्रा. बताइए भी. जी. तो ये फिर भारत जोड़ो यात्रा पर बात कर रहे हैं, तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा खटकेगी ही, क्योंकि हम अपने मन की बात करते नहीं, लेबरर्स की, किसानों की मन की बात सुनते भी हैं, इनकी तरह से अपनी बात दूसरों पर नहीं थोपते. All right, no problem. Next speaker साध्वी प्रज्ञा. अध्यक्ष महोदय, यूसीसी पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद. मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि इस देश की तरक्की के लिए एवं लोगों की खुशहाली के लिए आओ लाए व्यवस्था में परिवर्तन, बनाए पूरे देश का एक कानून और मिटा दे सदा के लिए व्यक्तिगत कानूनों से उपजित ये भेदभाव. आज कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है, पर क्या ये कांग्रेस भूल गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग सर्वप्रथम देश के पहले आपके अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही उठाई थी. तो क्या अब कांग्रेस चंद वोटों के लिए इस बिल का विरोध कर देश से खिलवाड़ कर रही है? आओ मिलकर करें समर्थन यूसीसी का और बनाए महिलाओं और विशेषकर अपनी मुसलमान बहनों को सशक्त. आओ पकड़े ना यूसीसी की भारत का कानून. Points. Questions. Nitish Kumar, followed by Abhishek Banerjee. Yes, Nitish Kumar. You have a point? Chair, I want to raise a PPP. On? Like what's the need? Sir, I sent a reply to Rahul Gandhi and Lalu Prasad Yadav, which I want back.
Why? Like, you want a reply? No, I sent a reply on their statements which I need back. I have to, take some sources from it. Volunteers, please check in that heap of chits if you can find her chits. नितिन गडकरी, उनको ढूंढ के दे दो, उनकी चिट्स उन्होंने भेजी होंगी लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी। ओके, यस, क्वेश्चन। माननीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने कहा कि हमारे देश में हमें समानता चाहिए। वो समानता कहाँ जाती है जब 300 में से 298 वाले कट ऑफ से रह जाते हैं और 88 मार्क्स वाले का टॉप ब्रांच। Coming to you, is the question done? नहीं, क्वेश्चन आप पूरा पूछिए, फ्री टू फॉलो अप की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन पूछिए पूरा। I also include in the question that जब एक गरीब किसान का बच्चा एक अच्छे मिशन में जाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और सिर्फ इसकी वजह से रह जाता है कि उसका 1 या 2 नंबर कम है, और वहीं सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वांट टू बी। ठीक है, वी गॉट योर क्वेश्चन। नीतीश कुमार जी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? रिप्लाई। देखिए, मैं इस बात यस। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसी को पढ़ाई लिखाई की कदर ज्यादा। Okay, I'm not targeting you, I'm just asking what's your qualification. I think ruling party has got the answer. ठीक है? Yes, reply. देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सभी को एक जैसे अधिकार मिलेंगे, और जहाँ तक आप मार्क्स की बात करते हैं कि वो 1-2 नंबर से रह जाएगा, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है और सभी को हम एक जैसे कानून देने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद। पर मेरा भी आपसे एक यह प्रश्न था कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो हमने स्कीम शुरू की, जो आप लोगों ने ही स्कीम शुरू करवाई थी। Yes. No, you can continue. तो जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो आपने स्कीम शुरू करवाई थी, उस पर आप लोग क्यों काम नहीं कर रहे? उसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? I'm coming to it. There is a PO I know. अगर delegate to delegate बात करनी है, you can talk delegate to delegate through chits. Don't talk verbally. Yeah, this is for them. You can send someone yourself and you can talk. There's no issue. Yes, quote unquote. Reservation system was started by Dr. Quote unquote. Not Jawaharlal. Quote unquote. Honorable member quoted and I quote. Honorable member quoted about there was a mistake in the name that Jawaharlal Nehru started the system of discrimination, and why the same party is against. No, ma'am. See, this is subject. Ma'am, I'm defending you. I'm here to defend you. See, subjective PO नहीं होता है. For example, you are stating कि B.R. Ambedkar ने reservation system लेके आया. No, he is not heading the law commission. There's someone heading the law commission at the time of reservation. And for that particular matter, आप ये नहीं बोल सकते कि ये reservation लेकर आए या फिर ये reservation लेकर आए. Reservation started in 1608 in British time. The first industrial reservations was there that black people will work for these hours and white people will work for these hours. So it's a subjective in nature, is not considered. Thank you so much. Abhishek Banerjee. PO के लिए मैं डिफेंड करूंगा तुम सबको. अगर PO सही होगा then only I'll take, or else I'll defend. मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, इन्होंने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था, पर मैं एक B.R. अम्बेडकर को भी कोट करना चाहूंगा, जो इन्होंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में 1948 में. It is perfectly possible that the future parliament may make a provision by way of making a beginning that the code shall apply to those who make a declaration that they are prepared to be bound by it. So that if the nation states the article of the code may be purely voluntary. आप आगे बात कर सकते हैं. Reply. देखिए, इस बात पर मैं यह कहना चाहूंगी कि यूसीसी से हम किसी भी तरह के एजुकेशन सिस्टम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम उसे किसी भी तरह से मना नहीं कर रहे हैं. और जहां तक आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये बात कही गई थी और B.R. अम्बेडकर जी द्वारा ये बात कही गई थी, तो आपको कांग्रेसी होने के बावजूद ये नहीं बता रहे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपके ही मंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठाई थी, तो फिर आप लोग अब उसका विरोध कैसे कर सकते हैं? अभिषेक बनर्जी किस पार्टी से है?
अभिषेक बैनर्जी किस पार्टी से हैं? अभिषेक बैनर्जी किस पार्टी से हैं? AITC. Sit down. Sit down. This is lack of research. आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. मैंने लिस्ट 3 दिन पहले शेयर कर दी थी. यू शुड रिसर्च अबाउट पोर्टफोलियोज कि जब आप टारगेट करोगे किसी मिनिस्टर को, आपको पता होना चाहिए वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन ओनली यू कैन आस्क क्वेश्चन इन अ मोर बेटर वे. आप उनसे नेहरू के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, वो तो बोल देंगे हम लोग तो ममता बनर्जी की सुनते हैं सिर्फ, द फर्स्ट सुप्रीमो, है ना. चलिए, गुड. Mowa Moitra. Next 60 seconds. Thank you, Chair, for the recognition. In the landmark judgment of S.R. Bomai versus the Union of State in Union of India, the Honorable Supreme Court explained the concept of secularism as secularism is a part of fundamental law and basic structure of Indian political system. I stand here vehemently opposing the Uniform Civil Code as it is against the values of secularism, violating the religious rights of the minorities such as the Muslims, Sikhs, Jains and even the tribals. How is the government going to deal with the rights of the third gender and also the LGBTQ+ community? This government's biggest success is the recasting of cowardice as courage, and UCC is just another vote bank for the party for the 2024 elections and an ideology to make India a Hindu Rashtra. Thank you so much. Very fine speech. Sunita Duggal, followed by Naib Singh Saini. Chits, send to Chits. Thank you, Chair, for the recognition. मोहा मोइत्रा जी, आपने 25 जून 2019 को हमारी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि रिलीजन एंड गवर्नमेंट आर नॉट इंटरट्वाइंड इन दिस कंट्री. तो मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने द केरला स्टोरी मूवी को क्यों बैन किया? क्या इसका कारण है कि आप मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं? Yes. The Kerala story the ban of the movie The Kerala Story was not because we support the Muslims. It was because to maintain a decorum in the country so that the rights of any religion is not violated. Okay. No, if the plea to follow up is in the movie, she has already replied to maintain the decorum. मैम मैं ऐसे करने से नहीं ले सकता question. Try to understand. मुझे 60 delegates को सुनना है. I have less time. Send through chits and I will be reading every chit. I will skip my lunch break. I will read the chits. Don't worry. Chit. I will skip my lunch break. I will read the chits. Don't worry. Yes. Which point you raised to? No. Chit. Yes. Yes. Next. मैं हुआ मोहित से ये पूछना चाहूँगा, वो रिलीजन पे बात ही क्यों कर रही है जब वो अपने रिलीजन को खुद रिस्पेक्ट नहीं करती, जो काली माता को भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, वो रिलीजन के बारे में कैसे बात कर सकती है? रेफरेंस काली माता को रिस्पेक्ट नहीं करती का रेफरेंस उन्होंने मोहित ने अपनी स्पीच में बोला था कि मैं एज ए इंडिविजुअल काली माता को कुछ भी समझ सकती हूँ. See, according to Bhavishya Puran and Brahmakand Kand 6, it clearly states that goddess Kali is the goddess which take offer of the meat and can drink alcohol. This is written in Hindu scriptures. Okay, you want to reply? That was what I was saying. That Kali Mata is known for drinking alcohol and consuming meat. That does not corrupt or pollute the very nature of the god. If goddess Kali drinks alcohol, that is to promote. You understand the gist of it. See, when God Shiv, it is religious चीजों को जितना दूर रखा जाए उतना सही रहता है debates में. But when God Shiv has that poisonous wala thing in his throat, so goddess Kali has to drink alcohol just to maintain the decency. It is the story. It's a complete story in Bhavishya Puran. Go read that. Okay. I am saying this again. The Millennium School do not promote or do not have any backing on any religious statement made in the house. If any delegate promote any religion, speak anything religious, speak anything controversial, the Millennium School has no backing of the same.
This is clear. Okay? Yes, thank you. रिलीजियस वाली चीजों से थोड़ा बच के चलो अपनी स्पीचेस में. नितिन गडकरी, everything is on live. I don't want you to face any court cases in the near future, so preserve yourself. Yes, Nitin Gadkari. Your speech now. Thank you, Chair, for the recognition. Quote, nations like plants and human beings grow, and if the development is thwarted, they are dwarfed and overshadowed. Unquote. As the famous saying goes by Claudie McKay, development of a nation is our chief priority and can't be dwindled with. Religious sentiments only delay the process of development. To create a more secular, democratic and equal nation for all and to serve justice to all irrespective of their religious background, to perish the communalism leading to discrimination between the citizens of our country, I hereby support the application of Uniform Civil Code in our nation. Thank you. Asuddin Owaisi, followed by Mame portfolio. Pratibha Singh. Thank you, Chair, for the recognition. How does UCC balance the principle of secularism, equality, and justice with the freedom of religion and conscience? Yes. Article 14, 18, 25 to 20. Can I? Yes. या तो मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे यूसीसी लाने से जो मुस्लिम लेडीज को जो आपका खुला लॉ कहता है कि डिवोर्स लेने पर एक महिला को मेल को कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ लैंड या कुछ कैश, तो अब हम जब उनके लिए फेयर राइट्स लेके आ रहे हैं कि उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इससे इक्वालिटी प्रमोट हो रही है. और रही बात सेक्युलरिज्म की, इससे हम उनके कोई राइट्स नहीं डिटेन कर रहे हैं, उल्टा उनसे तो इनको फायदा हो रहा है, उनके राइट्स एनहांस हो रहे हैं. आई रिपीट, हम यूसी से किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के राइट्स नहीं छीन रहे हैं. In the 1950s, Hindu laws had several flaws, and Jawaharlal Nehru introduced the Hindu Succession Act, which even further had flaws, which was amended in Hindu Succession Act 2005 amendment. If Hindu laws can be amended, why not Muslim laws? Why can you not make Muslim personal laws which can remove the discrimination which is faced by the women? Why to introduce a uniform civil code which highly promotes the Hindu codes on and enforces it on the other religions? I'd like to say Wait. What's the point? You are to. No. Chick. Sir, try to understand the gravity of the time. It's already 9:30. I have not wrapped up with 10 speeches. It's 60 people. Yes. I'll reply through a chat keeping the time in mind. Okay. Fair enough. Yes, Pratibha Singh. वैसे सर हम हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म कोड के एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट यूनिफॉर्म लॉज आर नॉट क्वाइट यूनिफॉर्म. So though uniform code doesn't recognize binary or polygamy, including for Muslims, but grants an exception to a Hindu man marrying once again if his wife doesn't conceive a child by the age of 21 or a male child by the age of 30. On what basis do you state this as uniformity? And if this is something you want to impose on us, then on the name of uniformity, then we don't need it. मैं ये कहना चाहूंगी, जब आप ये पॉइंट उठा रहे हैं कि मुस्लिम लॉज के अंदर ही हम उनको अमेंड करने का राइट्स क्यों नहीं देते, तो फिर अगर हम हिंदुओं को भी दे दें, फिर आप बोलेंगे कि आप तो हिंदू नेशन बनाना चाह रहे हैं, आप तो हिंदू नेशन बनाना चाह रहे हैं. आप पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं. हमने पॉलीगैमी को कब प्रमोट किया? प्लीज प्रोवाइड अ स्टेटमेंट, अ सोर्स. No cross talks. साध्वी प्रज्ञा, आपने एक चिट भेजी है, पीओ चिट है और नेम नॉट मेंशन्ड. सर जिसने क्वेश्चन भेजा है उसने नेम मेंशन नहीं किया. आपको ये कैसे पता कि वो चिट फिर आपको पूछी गई है? सर मेरे को देके कर.
कीप दिस थिंग इन माइंड, फ्रॉम टू लिख दो अच्छे से, मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे वरना फिर। इसको रख दो, मुझे नहीं पता जिसका भी है उसको वापस दे दो। जो चिट फॉर्मेट पे नहीं होगी, हाउ यू वांट मी टू मार्क इट, ओके। इफ यू फाइंड एनी चिट जिसका फॉर्मेट ठीक नहीं है और वो चिट आपके पास आ गई, रेज अ पीपीपी पर्सनल प्रिविलेज, सेमी की सर इस चिट पर पोर्टफोलियो अच्छे से मार्क नहीं है, फॉर्मेट सही नहीं है, एंड टीयर दैट चिट, दैट्स इट। Dipendra Hooda, Farooq Abdullah, suspended for the committee for 5 minutes, go outside of the committee. I don't need to give the reason. You know it very well. No, you know the reason already. Prohibition of internet strictly to be followed in the committee. Abhishek Banerjee. So, you got the answer now? No brand, you can do. Yes. Thank you, Chair, for the recognition. In diversity, there is beauty and there is strength. How befitting are these words of the great poet Maya Angelou with regards to our country, which is a mix of multiple cultural traditions, where each culture combines with others while maintaining its contrasting yet distinct quality. As we discuss the Uniform Civil Code and its implications on the Indian society, I strongly believe that it would have significant negative consequences on the society and would undermine the principles of cultural diversity, religious freedom, and gender equality. This in turn would erode the rich tapestry of our diverse society. Furthermore, it would be unfair to impose the traditions of one group upon the other groups. Even Dr. B.R. Ambedkar, the writer of the Indian Constitution, clearly pointed out that the application of the code may be purely voluntary. So hereby, I firmly oppose the Uniform Civil Code and believe that social engineering should take place gradually in a piecemeal manner and should not be a hasty decision. All right. Thank you for the fine speech. Questions. Questions. Anurag Thakur, followed by Mami Portfolio at the last. Hema Mali. Yes. Thank you, Chair, for recognition. पीस एंड ऑर्डर की तो आप बात ही मत करिए। जब 1984 सिख राइट्स हुए थे, उन्हीं में आपकी मेंबर की कांग्रेस के मेंबर के पीपल इन्वॉल्व थे। हाँ जी, बताइए। पर मैंने पीस एंड ऑर्डर की तो मैंने बात You have said in the last piece. It should be like the Uniform Civil Code should be implemented in a piecemeal manner, not. So why you are talking about peace? जब कांग्रेस के लीडर्स पीस ना रखते हुए भी 1984 में सिख राइट्स में थे, जो कि बहुत ज्यादा वायलेट हुआ था। It was very terrifying. I said that this should be a gradual change, the Uniform Civil Code, and not a hasty decision. I never talked about maintaining peace and order. You have talked in the last that you want peace. हो गया? Done? Last 2 minutes of conversation will not be marked in any way. There is no demand for plea to follow up, no plea to follow up granted, there is direct conversation, so no marks for the last 2 minutes. Okay? Sit down. आप लोग ऐसे करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिर्फ पेन छोड़ दिया था और कुछ नहीं किया। You have to understand a very clear thing, delegates. House runs by rules. That's it. Yes, Hema Malini. Thank you, Chair, for the recognition. I would like to ask Abhishek Banerjee, could he elaborate on how the current system of multiple personal laws aligns with the principle of gender equality and justice with women? Yes, sir. In some states, including UP and Uttarakhand, Hindu women still lack equal rights in agricultural property. The government should address the flaws and abuses in personal laws first and then think of implementing the UCC. The reform of Hindu law as manifested in the legislations of 1955 and 1956 had in fact begun more than 100 years earlier. The daughters got the right into in co-parcel money property in only 2005. All right, delegates. Just let me know, delegates, sit down. Just let me know, do you receive question checks, POI checks that do not have my sign or checked by red pen? क्योंकि मैंने अभी कोई चेक नहीं किया है। आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं चेक्स वाले? How? Volunteers? मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, तो इनके पास सवाल जा कैसे रहे हैं? मैंने कोई क्वेश्चन चेक ही नहीं किया अब तक।
आप लोगों ने डायरेक्ट भेज दिया उनको, उस पे वाई एग्जीक्यूटिव बोर्ड लिखा है, इट शुड बी हियर। अभी कोई चिट चेक नहीं हुई है, अभी कोई क्वेश्चन आंसर मत करो, गिव द चिट बैक। जितने भी क्वेश्चन आए चिट वाले जो चेक नहीं है प्लीज गिव इट बैक, ठीक है? आ जाइए वापस। ऑल राइट, PPI, yes. It was Anurag Singh. Om Birla. One. Just now. The speech or the question? The name of the speaker. Who just had the speech? Abhishek Banerjee. Om Birla. UCC समान नागरिक संहिता यह स्कीम है जो सभी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए समान है। इसके अंतर्गत आते हैं मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी एंड लॉ। आप देखिए हमारी मुस्लिम महिलाओं को जब 3 तलाक को बंद किया गया था, सो कॉल्ड मुस्लिम रिचुअल जो जिसे कहते हैं, तो कितनी राहत मिली थी उनको। तो सोचिए जब यूसीसी आएगा तो हमारी महिलाएं सभी तरह की महिलाएं एक साथ खड़ी हो सकती। वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड से इक्वालिटी फॉर लॉ। मैं कहना चाहूंगा इस देश में डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होंगे। तो मैं तो कहूंगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिलीजन। एक बार एक कोर्ट था, once NKT said UCC is not a Hindu-Muslim conflict. In simple words, it's just elimination of discriminatory laws in our country. All right, questions. Questions to Om Birla. Dipendra Hooda followed by Mami YS Jagannath Reddy. आप अपने UCC में बताते हैं कि आप इसमें यूनिफॉर्मिटी है, और आप मुझे बताएंगे कि यूसीसी की वजह से आज हमारा बेसिक टीचिंग ऑफ डॉक्टर आइडेंटिटी खतरे में है, which is simply the reason. Yes. देखिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले बात कर रहे थे माइनॉरिटीज की, कि इनको सप्रेस किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट जब सिमिलर हो जाएंगे, उनके पास यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी एज कास्ट रिलीजन, तो आप कहां से बताइए सेक्युलरिज्म आपको डिस्टर्ब हो रहा है। Okay. Yes. PPI. Yes. I have like received a question check, so like I have to send another check or like. No, give that check back. अभी आप ये मान लो आपको कुछ रिसीव ही नहीं हुई है। No, like I have to reply on that check only or another check. You don't have to reply on a question sheet as of now because I have not checked it. The checks which are not, try to understand one thing. आप लोग checks भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उस check का मार्क्स नहीं मिलेगा, that's it. जो check मार्क नहीं होगी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। Got a question? Got an answer? Yes, why is everyone ready? I would like to ask, sir, you said that UCC will help in the development of the country. You are talking about human rights, but what is your government's stand on surrogacy, which is a boon for childless couple? The surrogacy practice in India is increasing day by day, and the poor women are being exploited. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वुमेन के राइट्स सिर्फ शादी और डिवोर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। The poor women of country are being exploited due to surrogacy. So may I ask, what step has the government taken to curb the commercialization and exploitation of poor women of our country? All right. Answer. Okay, granted. We'll have yes. Yes. Just wanted to confirm that all the checks we have sent are taken back by the volunteers, or have to write new checks? No need to write new chits. It is that I have not checked any chits. I have not even touched it. I will check those chits during your break. Then I'll give it back to you, and you have to reply back. So I just wanted to confirm that all the checks are taken back from All the chits might be taken back. the volunteers.
confirm it from the volunteer. Yes, ma'am. Thank you, Chair. Chair, I'd like to ask the TPI, can I know the portfolio of the speaker that asked me the question from that side? Who was that? Pratibha Singh. All right. We have the last speaker for this slot, Bhagirath Chaudhary. At this point, we are recognizing more speakers. Delegate wishing to make their opening statement, please raise your placard. Rahul Gandhi, followed by Dr. S. J. Shankar, followed by Rajnath Singh, followed by Amit Shah, followed by Mamta Banerjee, followed by Lalu Prasad Yadav, Mohammed Dharmendra Pradhan. Is Dharmendra Pradhan right? Dharmendra Pradhan कहाँ पे? You are recognized, followed by Ravi Shankar Prasad. Followed by Manohar Lal Khattar, followed by Sonia Gandhi. Will recognize more speaker in the next one. Thank you. Yes, Bhagirath Chaudhary. Thank you, Chair, for the recognition. The idea of a UCC is not about erasing our differences, but about embracing a common ground that upholds the basic cultures, traditions, and faiths, preserves a legal framework that transcends religious boundaries and promotes harmony. By adopting a uniform civil code, we can foster a sense of national identity that is not overshadowed by sectarian divisions. It will pave the way for a more inclusive and progressive society, where women's rights are safeguarded and outdated practices that perpetuate discrimination are eliminated. Thank you. Thank you so much. Questions? Bhagirath Chaudhary से सवाल. मैम एक portfolio. Priyanka Gandhi, followed by मैम your portfolio. Shashi Thakur. Yes. आपसे ये सवाल होगा कि आप कह रहे हैं कि यूसीसी आने से इक्वालिटी और जस्टिस आएगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदू गर्ल्स के लिए क्या जस्टिस आएगा? Okay. सर आप बताना चाहेंगे? हिंदू गर्ल अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो कर सकेंगी और कोई भी उनको वायलेट नहीं कर सकेगा। आप मुझे लव जिहाद के बारे में अपनी राय बताइए। लव जिहाद के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ उनके राइट्स को वायलेट कर दिया जाता है और लव जिहाद वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड पे नहीं आया है बिकॉज इट वाज आस्क्ड विदाउट अ ब्रीफ फॉलो अप. ठीक है? ओके, थैंक यू. यस मैम. Making laws uniform or accepting one law for an entire country doesn't ensure equal rights for all people. Uniformity has nothing to do with equality or equity, but equality. I am not clear with your question. Ma'am, please more clarified the question. Making laws uniform or enacting one law for an entire country doesn't ensure equal rights for all people. Uniformity has nothing to do with equality or equity, but equality. समझ आया? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. मैम का क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्मिटी बात नहीं करता है इक्वालिटी और इक्विटी, राइट? तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि यूसीसी आने से इक्वालिटी और इक्विटी इंप्रूव होगा या स्ट्रेंथ होगा, राइट ना? यूसीसी सिर्फ एक राइट्स है जो सबके राइट्स को बचा रहा है, सिर्फ कोई वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हर किसी के राइट्स है, वो हर किसी के राइट्स को बचा रहा है. Okay, there are people from class 8 to 12, parliamentarians. See, sit down, sit down. You have a picture in your NCRT textbook, civics, either class 9th or 11th, I don't remember it clearly. There's an elephant, there's a monkey, there's other two animals.
and they have a line to start their race. This is not equality because everyone have different strength. There's a tree to climb, there is elephant, there is monkey and there is donkey. So monkey will definitely climb the tree fastest. So you have to draw a distinction between equality, equity and uniformity. All the three terms are interconnected but not same. Got it? Rahul Gandhi. Yes. Yes, Sunita Duggalji, why you are using WhatsApp and who stated it is, you know? She is not using the internet because her safe my data on WhatsApp. हाँ व्हाट्सएप मैसेजेस अगर व्हाट्सएप मैसेजेस हैं सी वॉलंटियर्स अगर डाउनलोडेड पीडीएफ है स्क्रीनशॉट्स हैं व्हाट्सएप मैसेजेस हैं इट इज गुड टू गो अगर वो एलटीई वाला एरो बीप कर रहा है ना तब इट इज यूज ऑफ इंटरनेट ना इट्स क्लियरली फाइन इट्स क्लियरली यस But if can we reply, like somebody asks a question to someone else, can we reply via chat? why you want to be his or her advocate simple as that okay Rav, yes ma'am. Thank you for the recognition, Chair. I didn't get the word this activity when you were recognizing the delegates today. You are the last delegate for this like speech. Thank you, Chair. Quick to follow up. Yes. What was the name of the last speaker who said the speech? Just now, Yeah. it was Bhagirath Chaudhary. He was Bhagirath Chaudhary. Okay. Rahul Gandhi. Thank you, Chair, for the Pleasure. यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी दुनिया के लिए यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, परंतु बीजेपी सरकार के लिए यूसीसी एक एजेंडा है जिससे वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो ऐसे यहाँ तो कह रहे हैं पर सांसद के बाहर इन्हीं के लीडर्स की इतनी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल है जिनमें उन्होंने कहा है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब नेपाल में 2007 में नेपाल को हिंदू राष्ट्र सेक्युलर कंट्री बनाया गया था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कितनी परेशानी हुई थी, उन्होंने उसके खिलाफ कितने प्रोटेस्ट किए थे। अब वो भारत को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि जी का कहना है भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि 2024 तक हम भारत को विश्व कंट्री नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब भारत एक सेक्युलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ के लोगों पर ये अपनी इच्छाएं क्यों थोपना चाह रहे हैं? All right. Thank you, delegate. Nirmala Sitharaman, followed by Sir, your portfolio. Giriraj Singh. Giriraj. Okay. Ashwini Kumar Chaube. Ashwini Kumar Chaube, get up please. Please move out of the hall for 5 minutes. Enter Anthony out of the hall for 5 minutes. बाहर जाइए. Go out. आप लोगों को इन 5 मिनट का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है, जिन लोगों को सस्पेंशन मिल रहा है बार बार। 5 मिनट का मतलब है 2-3 लोगों की स्पीच हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगी, ठीक है? जाइए, चलिए सवाल पूछिए ना। जे सेक्युलरिज्म की बात ये करेंगे, हम हमें कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? आप एक सीधी सीधी बात सुनिए, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में फादर जोसेफ को नहीं लेंगे, फादर जॉर्ज पुनिया को लेंगे, क्योंकि फादर जॉर्ज पुनिया जो कहता है कि भारत की जमीन इतनी गंदी है कि मैं चप्पल पहनता हूँ ताकि टच ना हो जाए। फिर जब ये कर्नाटक पहुंचते हैं, कर्नाटक पहुंच के उस नेता के घर जाते हैं जो कहते हैं कि हिंदू शब्द इतना गंदा है। गुजरात के टाइम पर ये जाते हैं, जो मेघना पाटिल के घर जाते हैं जो कहते हैं जिनकी स्टेटमेंट है गांधी इज द गन्स। फिर जब दिल्ली पहुंचते हैं तो ये उस कन्हैया कुमार को साथ लेते हैं जो कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Really good. ये सेक्युलरिज्म की बात है। अगर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर, तो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बताइए, really good. तो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बने, पर ओपोजिशन होने के नाते हम जिन लोगों को यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा उनकी बात आगे रख रहे हैं बीजेपी के आगे। इन्हीं के
Party से पूजा शकुन पांडे की statement है, even if 100 of us are ready to give 20 lakhs of Muslims, then we will be victorious and go to jail. तो ये कैसी victory है जो आप Muslims को मार के लेना चाहते हैं? I'll grant. अच्छा, आप लोगों को बात पता है कि टैपिंग के अलावा एक और नॉन वर्बल सिंबल होता है शेम, वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? यस, ग्रांटेड. शेख फारूक खाना, अब्दुल रज़ाक, हाजी बिलाल, इन सब ने भी गोधरा में 59 हिंदुओं को मारा था. ये सारे कांग्रेसी नेता थे. कांग्रेस के ऊपर कुछ बोलेंगे? यस. ये बात करते हैं कम्युनल वायलेंस की. तो 23 फरवरी 2021 में दिल्ली में कम्युनल वायलेंस हुआ जिसमें 53 लोग मारे गए, जिसमें 40 लोग मुस्लिम थे. और उसको सजा देने के बजाय बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था. गुड रिसर्च. ऑलराइट. यस, गिरिराज. जैसा कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं यूसीसी हमारे लिए एक एजेंडा है. इसका मतलब यह है कि हम इस देश के विकास के खिलाफ है, क्योंकि यूसीसी से हम इस देश का विकास करना चाहते हैं. ये देश सामान्य हो जाएगा, इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों सामान्य हो जाएगी. और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए एक एजेंडा है. हाँ, एजेंडा बनाएंगे क्योंकि हम देश का विकास करना चाहते हैं. और इसका साफ साफ आपका ये मतलब है कि आप देश के विकास के खिलाफ हैं. और आप देश के विकास की बात करते हो, क्या बोला था मजदूर पाकिस्तान चले जाओ वरना गोली मार देंगे तुम्हें. Plea to follow up? Okay, at this point of time, by the power of the moderator, I'm opening an unfiltered debate for 2 minutes. You can use the unfiltered words and unparliamentary sentence for next 2 minutes. Yes, go ahead. जैसा कि अभी आपने बोला है, ये एजेंडा है, मैंने एक एजेंडा मांगा है. चलिए, आपकी बात को मानते हुए आपने एक बात बोलना चाहूँगा. आपने एक बार एक समय बोला था मसूद अजहर जी के आतंकवादी को आपने इस कदर सम्मान दिया था. क्या आपने ये सही किया था? हाँ या ना, आप बता दीजिए ये बात. जी. अनफिल्टर्ड है, रिकॉग्निशन नहीं मिलती. सम्मान देने की बात करते हैं तो इनकी पार्टी से जो डिप्टी सीएम है ईश्वर रखा, उन्होंने टीपू सुल्तान जी को कितना अब्यूज किया था, जबकि वो तो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं. उनकी वजह से आज यहाँ पर बैठे हैं, उनको ही अब्यूज करते हैं, उनको कहते हैं मुस्लिम गुंडा. Yes. जैसा कि आपने ये बात की है, No need to take recognition and you can cut the delegates 2 minute unfiltered. जैसा कि आपने ये बात कही है कि उन्होंने टीपू सुल्तान जी को जैसा भी कहा, वो तो मैंने नहीं सुना, पर मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में जो स्लिपरी टर्म्स है ना, वो कम नहीं है. क्या आपको पता होगा कि आपकी पार्टी में ममता बनर्जी अम्बा 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 अम्बा. You don't need to take recognition. ममता बनर्जी is not from our party. Okay. तो आप बात करते हैं बीजेपी अब खुलेआम बोल सकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे. 2 मिनट का अनफिल्टर्ड है. तो आप बात करते हैं इक्वालिटी. काटो बीच में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. इनको लगता है कि सफेद टी-शर्ट और खाकी पैंट में डालने से पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी चलेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा. अपने बिजनेस के बारे में इनके प्रधानमंत्री कश्मीर के ऐसे गुनहगार से कनेक्ट हो अपने ऑफिस में सामान ले आते हैं. ये क्या कोई इक्वालिटी की बात हुई? Let's resume to the formal debate. Thank you so much. It's really good to see. Good research. अच्छे पॉइंट्स बोले आप लोगों ने, मर्यादा में रहते हुए. अच्छी बात है. चलिए, नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर एस जयशंकर. Thanks, Chair, for recognition. Attention, honorary members. In today's ever-changing times, when national issues are getting increasingly complex, UCC is the need of the hour. It's not the ultimatum to all our problems, and we accept that. But while we are presenting a perspective to solve a major chunk of the ongoing problems, opposition are busy sowing seeds of communalism to fill their ballot. While we are trying to put a lens of equality on India, some are working spreading rumors about UCC snatching tribal lands. UCC is not here to take, it is here to give. Equal representation, uniformity, gender equality. If India is a tree with diverse roots, UCC is not here to uproot diversity, it is here to make its grip firmer. We work for national integration, while some are working to break the very fabric of democracy by radicalizing the thought process of Indians.
The minority should not see it undermining their religion in their very own land. I would go on to say, UCC also doesn't stand for majoritarianism. Honorable Chair, it's not the issue that we have. It's who presents the solution. And we are not the ones who change stance for the ballot. Take 85 for example. Thank you. I'll give it to Ma'am. पीछे कौन है? P. Chidambaram followed by Lalu Prasad Yadav. Yes, which point? S. Jaishankar. Dr. S. Jaishankar. एक तरफ ये इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी की मेंबर अमित शाह ये कहते हैं कि ट्राइबल्स को और क्रिश्चियंस को इस पॉलिसी से एक्सेप्शन मिलेगा। क्या इस तरह की रिफॉर्मेटी आएगी जहां पे एक्सेप्ट करोगे आप लोगों को? जी बताइए। हर किसी लॉ के अंदर या फिर जो भी बिल पास होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रखने पड़ते हैं ताकि किसी कम्युनिटी की या फिर किसी भी रिलीजन की कोई पर्सनल जो फीलिंग्स है वो हार्म ना की जाए। लेकिन अगर आप फिर पहले आप सवाल उठाते हैं कि आप इंडिया को यूनिफॉर्म कैसे बनाएंगे, लोगों को साथ में कैसे लाएंगे, ट्राइबल्स पे अप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम उनको एग्जेम्पशन भी ना दें, उनको साथ में भी लाएं, सब कुछ कर लें। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंट्री को चलाएगी तो और कौन चलाएगा? हम चला तो रहे हैं। We have repeatedly shown that we can run the country. We have been elected repeatedly. It's a symbol that we have been. There's a difference between ruling the country and governing a country. We have been governing the country pretty well. Okay. No, lack of time. Yes. You can continue the conversation through chits. And members, volunteers, do not collect chit for next 17 minutes. अगले 17 मिनट के लिए 10:20 तक कोई चिट कलेक्ट मत करना, वो ऑलरेडी फुल हो गया है। मुझे दे आई चेक दोस चिट्स साइड बाय साइड, ठीक है। जब तक आप लोग चिट्स लिख सकते हैं, आप सिर्फ देंगे नहीं, लिखकर अपने पास रख लीजिए। 10:20 के बाद अपनी चिट्स दे देना, 4-5 जितने भी लिखोगे तब तक, ठीक है। ओके, थैंक यू। यस, क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द रिलेशनशिप। अगर इक्वालिटी की इतनी ही बात हो रही है तो मुस्लिम मोची आरक्षण के बाहर और हिंदू मोची आरक्षण के अंदर उसका लाभ ले। मुस्लिम नारी आरक्षण के बाहर और हिंदू नारी आरक्षण का लाभ ले। मुस्लिम वाल्मीकि आरक्षण से बाहर और हिंदू वाल्मीकि आरक्षण के अंदर उसका लाभ ले। तमाम जातियां आर्टिकल 341 के तहत आरक्षण के बाहर, जो कि 1950 से चला आ रहा है, तो आप ये इक्वालिटी की नजरों में नहीं लेते? बताइए। देखिए लालू प्रसाद यादव जी, आप यह बात समझ लीजिए कि यूसीसी हिंदूज और मुस्लिम्स के बारे में नहीं है, यूसीसी इंडियंस के बारे में है। और भी बहुत सारी कम्युनिटीज है जिन्हें हमें कवर अप करना है, जैसे कि जो पार्टी है जो पूरी दुनिया से मिट गए, वो सिर्फ हिंदुस्तान में फल फूल रहे हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर देम आल्सो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। राजनाथ सिंह। सामान्य सामाजिक संहिता जिसके अंतर्गत सभी वर्गों को सामान्य अधिकार मिलेंगे। एक महिला को अपनी सूरी गोद भरने का मौका, एक बहन को अपने भाई के समान जायदाद में हिस्सा और एक बीवी को अपने पति पर पूरा अधिकार मिलेगा। यह भारत का इतिहास रहा है कि अनेक सामाजिक रूढ़ियों का हल कानून के हस्तक्षेप से निकला है, फिर चाहे वो छूत-अछूत हो या सती प्रथा। आप इसे जाति धर्म से ऊपर उठकर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हल देखें। मैं पूछती हूँ आज सबसे, क्या आप कर देंगे अपनी 9 साल की बच्ची का विवाह? नहीं करेंगे ना? तो इस पे कानून बनाने में किस बात की आपत्ति है? देखिए, ऐसा अत्याचार तो नहीं चलेगा भारत में। ये जो वोट बैंक की लालची सेक्युलरिज्म का नारा लगाते घूमते हैं, मैं उन्हें अपने सेक्युलरिज्म की परिभाषा बताती हूँ। जहाँ एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुसलमान अच्छा मुसलमान, सिख अच्छा सिख हो और ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें, ये हमारी परिभाषा है। अंततः जो यूसीसी के खिलाफ है, वो भारत की एकता को भंगकर भारत को विश्व में महाशक्ति बनकर नहीं देख सकता। All right. Anyone else from the position like to ask a question?
सब लोगों के एक हो गए. Sashi Tharoor followed by Pichitam. There are several parts of the northeast India and even the tribal where ITC and CRPC don't apply. How can there be a uniform civil code in these areas? Just you. Yes, question. Chair, Question. Please repeat the question for me. There are several parts of the northeast India and even the tribal areas where the ITC and CRPC don't apply. How can there be a uniform civil code in these areas? That is Wait. Yes, Shankarji. I was asking the opposition member to speak a little louder. Not the person. अब बिटल लाउड. ओके, उन्होंने बोला है नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आईपीसी और सीआरपीसी लागू नहीं होता है, तो आप वहां पर यूसीसी कैसे लागू कर देंगे कुछ ट्राइबल एरिया में? यस. I would like to clarify. और I need to look up on that. हाँ ग्रांटेड. Yes, second question, but yes, you have different points. PPI. Okay. May I know her portfolio? Amit Shah. Oh, sorry, Rajnath Singh. Name of the last to last speaker. Last to last speaker is Rahul Gandhi. No, before that. एस जयशंकर. Thank you, sir. एक सेकंड. और किसी का कुछ पॉइंट? ठीक है. चलिए प्रश्न पूछिए. जैसे कि इन्होंने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमारी सेक्युलर परिभाषा ये है कि हमारे हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम हो, etc. etc. तो उसके अंदर हमें पर्सनल लॉज को मॉडिफाई करने की जरूरत है, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की. अगर हम पर्सनल लॉज में ही कुछ चेंजेस कर दें तो उससे भी हमारी ये सेक्युलरिज्म की भाषा सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन चेंज हो सकती है. सो यू यूसीसी ही आए. वेट. The part, please repeat the last line. वो impromptu question था, वो ऐसे लिखा हुआ नहीं है कहीं पे. The question is, main उसका जो था सवाल का वो ये था कि आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं जो सच्चा हिंदू है, सच्चा मुसलमान है, तो आप खुद डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो यूनिफॉर्मिटी की बात कैसे कर रहे हैं? India is a secular country, there is no doubt about it. We are not asking you to not practice your customs. You can go to masjid, you can go to church and practice whatever you want to do. India is indeed a secular country, but there are some aspects on which we need uniform laws, such as adoption. Can you please tell why Muslim ladies do not have the right to adopt a child? All right. Granted. I think the question wasn't clear to her. My question was that when you... Then you need not to take a plea to follow up. I wrote the question, she replied, and that's fine. Okay? Thank you. Thank you, ma'am. Yes, sir. Which point? It's PPI. They are the portfolio. Peachy Kamran. Yes? Thank you, Chair. I'd like to ask the POI. POI2? POI to Peachy Kamran. But she has not delivered a speech. Yeah, she just said something about... That's a question. Can But I- POI and POI? Chip. Yes. Next speaker, Amit Shah. Thank you for the recognition, Chair. I am strongly in favor of UCC. I believe that UCC is not a Hindu-Muslim debate. In simple words, it is the elimination of discriminatory. Wait first. अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, पीपीपी रेज कर लो और चले जाओ. चिट मत लिख के भेजो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? Why you are wasting papers? Yes, continue from start. I'll repeat it again. Yes. I am strongly in favor of UCC. I believe that UCC is not a Hindu-Muslim debate. It is, in simple words, the elimination of discriminatory laws. As mentioned in the Article 14 of the Constitution, everyone is equal before the law, regardless of what gender they have,
what religion they are of, and what caste they have. So UCC could help the women to improve their lives by prohibiting the child marriage and the polygamy, which is currently legal in some of the personal laws. It would help the economic development, as it would be easier for businesses to operate in the country, as they would not have to deal with any sets of personal laws. I would also make it clear that everyone, through UCC, everyone will have access to justice regardless of what financial or social status, and this line is in the section of 39A of the Constitution. Thank you. Questions? ऑलमोस्ट सबके दो सवाल हो गए हैं। आपका सवाल है? Yes. Can I please know the name of the girl that asked me the question before? Who's the girl? Who's that girl? No, before that. Please point out to one. The first one? Yes. Rahul Gandhi. No. Sonia Gandhi. The two girls who asked me the question, the first girl was before. Who was the girl? Could you just go to her, please? Shashi Tharoor. Okay. Okay. So, सबके ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन हो गए आप में से। लालू के साथ ही आप नीचे कर लीजिए। शशि थ्रू नीचे कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का प्लग कार्ड रेज है। भाई थोड़ा ऊपर। डेलीगेट a bit up. Farooq Abdullah, followed by Asaduddin Owaisi. Yes, Farooq Abdullah. Please उनको माइक दे दीजिए। कॉर्डलेस माइक दे दीजिए उनको। जय श्याम, सवाल पूछिए। सवाल क्या है? पूछना चाहता हूँ कि हमें तो बोलते हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है, क्या इनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या जो कि बीसीसीआई की टीम है, ना उनको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता, उन्हें टीम बना कैसे दिया? ओके, गांधी भी सीख रहे हैं। राहुल गांधी सीख रहे हैं, लेकिन आपने देखा उन्होंने कल क्या किया? उनका हर महीने में हर साल कम से कम 3 केसेस तो आते हैं। कभी मेरे बेटे को कोई केस आया? क्योंकि आपकी सरकार बताइए आप क्या होता है? वेट। राइट टू रिप्लाई। आपका तो नाम यूज नहीं हुआ। सरकार, अगर आप सरकार की पैरवी करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं दूंगा मौका भी। अभी नहीं मौका मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू। These questions are just for fun, no marking for this. Okay? Yes, Asaduddin Owaisi. आपको क्या लगता है? How would UCC avoid the issue of creating a homogeneous culture that may undermine the pluralism and diversity of India? How would UCC, the Uniform Civil Code, avoid the issue of creating a homogeneous culture that may undermine the pluralism and diversity of India? See, for the homogeneous culture, Reply by check. Yes, ma'am. Asaduddin Owaisi. Yes. So, I would like to repeat the question again. Okay, the question is, you want to repeat? Okay. How would Uniform Civil Code avoid the issue of creating a homogeneous culture that may undermine the pluralism and diversity of India? Got it? All right. Mamta Banerjee. Yes, you have a point? POI. Yes. POI to whom? No, sir. Chit. Yes, Mamta Banerjee. Answer for education. Uniformity does not guarantee equality. It is just the violation of Article 25, 29 and 30 of Indian Constitution.
BJP government just only want Hindu Rashtra following the Hindu Succession Act 956. Hindu Muslim, and not only Hindu Muslims, they are just radicalizing the Indian society. I want to ask, how can you bring the uniformity in the clothes we wear, the social beliefs we have? Modi ji, you said, "Achhe din aayenge." Have you ever seen the clashes in the Manipur, or the girls are being sexually harassed on the roads? They're not talking on it. Thank you. We are done with this speech? Done? Yes. Okay. Questions? You want to reply? You can use your right to reply because मोदी जी आपका नाम आया है, ठीक है? तो हम एक सवाल लेंगे. सुनीता दीदी. Reply to whom? Question पूछिए ना. Reply सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं क्योंकि उनका नाम स्पीच में आया है. POS. Can you tell what does the Article 30 of the Constitution state? Why you want, like, this was a research part. Ask the question related to the speech. Yes, Nitin Gadkari. Thank you, Chair. जैसा कि ऑपोजिशन ने अपनी स्पीच में आर्टिकल 25 को मेंशन किया है, उसी से रिलेटेड मैं सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करना चाहूंगी, जिसमें एससी ने ये कहा है कि दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर सिक्स एंड बुद्धिस्ट ऑब्जेक्टेड टू द वर्डिंग्स ऑफ आर्टिकल 25. The SC added that otherwise every religion will say it has a right to decide various issues as a matter of its personal laws. We don't agree with this at all. It has to be done through a decree of court. All right. Yes. What's the question is about? The question is about that you are stating that UCC is somehow violating Article 25. That Supreme Court has clearly stated that if you are going to provide, a liberty or lineage to some of the religion, particularly Sikhism that he the portfolio mentioned, Buddhism, Sikhism, then how you are going to say that UCC is going to harm because it is somehow encouraging plurality? According to me, it is violating Article 25 just because you are taking their religious rights. How can you interfere in the personal laws? Delegate, what is Article 25? Please read for me. Chair, can I? No. बैठ जाइए. Plead to So follow. they are religious rights of my No. There's a, you say Article 14 is equality before law, right? So there is exact wording for Article 25. Yes. Plead to follow. शिवराज सिंह चौहान. सवाल हो गया सवाल तो एक. चलिए पूछ लीजिए. Yes. Good question. All right. Lalu Prasad Yadav, sir. Yes, sir. PO on whom? शिवराज सिंह चौहान. ममता बनर्जी. बताइए. कोट अनकोट. मेंशन किया अपनी स्पीच में आर्टिकल 30 को वायलेट यूसीसी वायलेट कर रहा है. हाँ. यूसीसी आर्टिकल 30 को वायलेट नहीं कर रहा है. But that's a subjective term. उन्होंने सब्जेक्टिविटी बोला है. ऐसे तो बीजेपी वाले बोलेंगे किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं कर रहा. यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया जब कभी. वो सब्जेक्टिव है. थैंक यू. लालू प्रसाद यादव सर. ये यूसी की तो मैं सख्त खिलाफ हूँ. ये यूसी केवल एक बिल या लॉ नहीं बल्कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है. ये यूसी जो आर्टिकल 44 के तहत डीपीएसपी है, ये अपने आखिरी शासनकाल में उसे एक लॉ बनाना चाहते हैं. ओ माफ कीजिएगा, मैं तो भूल गया, पहले सारे साल तो हिंदू मुस्लिम मुद्दे भड़काने में चले गए ना. मुख्यमंत्री भी भाजपा का है, तो मैं उसका आपको एक शीशा दिखाना चाहता हूँ. Goa police recorded 22 cases of crime against women in 2022, a small rise compared to 257 the previous year. 60% of the crime against women registered were rape or molestation. देश चिल्ला रहा था कि प्रधानमंत्री मंत्री जाकर शांति की अपील करें, लेकिन वे पेरिस गए, इजिप्ट गए, अमेरिका गए, कोई मणिपुर क्यों नहीं गए? Shame. कब आएंगे? Health and Service Index down, Hunger Index down, Human Freedom Index down, World Happiness Index down, Environment Protection Index down, Gender Equality Index down. और कितने की मांग होगी, आप भी खुद जाएंगे सुनकर.
लेकिन ये सरकार काले कानून बनाते रहे, लेकिन जब तक समोसे में आलू रहेगा, राजनीति में मिस्टर लालू रहेगा। Good speech. To mention something, this speech has most number of MOUs for me. सबसे ज्यादा points इस स्पीच से निकले हैं, तो अगर आप एक पॉइंट को 10 सेकंड के लिए बोल रहे हैं तो 60 सेकंड में 6 पॉइंट्स बोलेंगे. He has stated almost 11 points on my verbatim. So keep this thing in mind. Okay? Thank you, sir. Questions? सवाल. लालू प्रसाद यादव से सवाल. ओम बिरला. Then Mr. This. Yes, sir. ओम बिरला, रमाकांत भार्गव एंड देन शिवराज सिंह चौहान. पूछिए. इन्होंने कहा कि यूसीसी बीजेपी का षड्यंत्र है. इनको मैं बताना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू इनके यूपी अलायंस के इन्होंने एक शुरुआत की थी यूसीसी की. और साथ ही मैं पूछना चाहूंगा, जेल की रोटी कैसी लगी आपको 2-3 सालों? जेल की रोटी का मेरे को तो पता नहीं, लेकिन आपको मैं आपके अलायंस के आपकी पार्टी के केस की मानता हूँ. आज जितने योगी का सीरियस आईटीसी काउंट 7, टोटल केसेस 3, रमा देवी सीरियस आईटी काउंट 6, टोटल केसेस 5, अनुराग ठाकुर सीरियस आईटी काउंट 4, टोटल केसेस 1, नितिन गडकरी सीरियस आईटी काउंट 1, टोटल केसेस 3, ओम बिरला आप भी सुनिए सीरियस आईटी काउंट 1 एंड टोटल केसेस 2, गिरिराज सिंह सीरियस आईटी काउंट 1 एंड टोटल केसेस 1, सचिन ओवैसी 7, 4, कैप्टन अमरिंदर सिंह 8, 3. और भी सुनाऊं? Notch research, notch. I'm impressed. Being a debater, I feel so fueled by your speech. Yes, granted. आपने अपना तो गिराया नहीं, अपना भी गिराते. Good. Open debate for next 2 minutes. There will be 5 minute talking session. We have just some things to throw over. Debate में चीजें अभी भी जुड़ गई हैं. So हम 5 मिनट बाद resume करेंगे. It's a 5 minute break. Okay? Wait for 5 minutes. Wait for 5 minutes. आप मैं साफ कर लेता हूँ तब तक इसको. But it was good. हाँ हाँ. पीछे है वो. हाँ, और सुनो प्लीज. Wait. Nobody will come and check. Become call them. No collection of checks. No collection of checks.
रोल कॉल वाली लिस्ट है दोबारा निकालनी है। हाँ रोल कॉल सब प्रेजेंट है। सब प्रेजेंट बस वाइट शीट खराब है। कोई बात नहीं छोड़ दो छोड़ दो फोन उठा लो फोन उठा लो मैम के लिए कॉफी आता है। मैंने ना छोड़ रखी है मतलब बहुत टाइम से आपने चलो अच्छा नहीं लगता तो अकेले मेरे हो वो याद आ गया उस कॉफी को किसी ने पहले